Topic of discussion is thermochemistry, and the subtopic is Hess's law of constant heat submission. So, there is a Chinese proverb analogous to the Hess's law, which is stated as there are many ways to the top of a mountain, but the view from the top is always the same. आप माउंटेन के टॉप तक जाने के लिए किसी भी रास्ते का इंतखाब कर सकते हो, लेकिन जो व्यू होगा माउंटेन के टॉप से वो सेम रहेगा इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड. सो इसी तरह से हम कुछ हेसेस लॉ में भी देखेंगे किस तरह से जो केमिकल रिएक्शंस डिफरेंट स्टेप से प्रोसीड करके फाइनल जो प्रोडक्ट है वो सेम बनती है. So Hess's law is stated as if a chemical change takes place by several different routes, the overall energy change is the same, regardless the route by which the chemical change occurs, provided the initial and final conditions are the same. A chemical reaction different routes से proceed कर रहा है. It doesn't matter कि वो किस रूट से प्रोसीड कर रहा है unless until उसकी इनिशियल और फाइनल कंडीशन सेम. फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन जिसके लिए 3 हमारे पास पाथ्स अवेलेबल हैं. A टू B जाना है, उसके लिए हम लोग पाथ 1 को भी फॉलो कर सकते हैं, पाथ 2 को भी फॉलो कर सकते हैं, पाथ 3 को भी फॉलो कर सकते हैं. अनलेस अनटिल हमारे पास इनिशियल और फाइनल कंडीशन सेम है तो रिएक्शन की जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Here is an example related to Hess's law. Heat of formation of carbon monoxide cannot be measured directly due to formation of carbon dioxide with it. So, energy cycle shows two routes for converting graphite and oxygen to carbon dioxide. दो मेथड्स के जरिए हम कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्टेन कर सकते हैं. या तो हम ग्रेफाइट को डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा के कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन कर लें, या फिर हम पहले कार्बन को हाफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा के कार्बन मोनोऑक्साइड ऑब्टेन करें और फिर कार्बन मोनोऑक्साइड को दोबारा से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा के कार्बन डाइऑक्साइड हम ऑब्टेन कर सकते हैं. सो फर्स्ट रूट इज डायरेक्ट कन्वर्जन while second is alternative via carbon monoxide. But the point is enthalpy should remain constant independent of the path followed. So the changes in enthalpy would be H1 plus H2. If the enthalpy of combustion for graphite to form carbon dioxide and enthalpy of combustion of carbon monoxide to form CO2 are known, we can determine the enthalpy of formation of carbon monoxide. So carbon plus oxygen react to form carbon dioxide and enthalpy of combustion is minus 393.7 kilojoule per mole. So हमने enthalpy of combustion for graphite to form carbon monoxide calculate की, that is minus 393.7 kilojoule per mole. And next is enthalpy of combustion of carbon monoxide to form CO2. कार्बन मोनोऑक्साइड को हमने मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा के कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन की और वहाँ जो एंथैल्पी ऑफ कंबशन हमें ऑब्टेन हुई डेट इज माइनस 283 किलो जूल पर मोल. सो हमें दोनों एंथैल्पीज मिल गई. नाउ वी कैन डिटरमाइन द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. सो कार्बन प्लस हाफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इक्वल्स टू कार्बन मोनोऑक्साइड और इसकी हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है. सो डेल्टा H इक्वल्स टू H1 प्लस H2. डेल्टा H1 हमें फाइंड आउट करना है. सो जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो इक्वेशन वुड बी डेल्टा H इक्वल्स टू माइनस डेल्टा H2. सो डेल्टा H इज माइनस 393.7 किलो जूल पर मोल माइनस और जो डेल्टा H2 था डेट वुड बी माइनस 283 किलो जूल पर मोल. और जब हम इसको सॉल्व करेंगे वी विल गेट माइनस 110 किलो जूल पर मोल. सो द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज माइनस 110 किलो जूल पर मोल. सो दो डिफरेंट एंथैल्पी ऑफ कंबशन से हमने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड फाइंड आउट कर ली.
The next point of Hess's law is summation of enthalpies. Let A be converted to D directly in a single step and heat evolved by delta H. हमने एक सिंगल स्टेप के जरिए रिएक्टेंट A को प्रोडक्ट D में कन्वर्ट किया और हमारे पास जो एंथैल्पी चेंज आया दैट इज डेल्टा H. If reaction can have a route from A to B and then B to C और उसके बाद वो D में कन्वर्ट हो रही है, so according to Hess's law, delta H would be delta H1 plus delta H2 plus delta H3 and mathematically हम summation का साइन लगा के delta H cyclic would be 0. So यहाँ पे जो फर्स्ट रिएक्शन था डेट इज के रिएक्टेंट ए जो है वो डायरेक्टली डी में कन्वर्ट हो रहा है और जो एंथैल्पी चेंज है वो डेट इज डेल्टा एच. जबकि दूसरे स्टेप में हमने ये कहा कि पहले ए जो है वो बी में कन्वर्ट हो रहा है डेट इज डेल्टा एच वन, जो एंथैल्पी चेंज आएगा. फिर जब वो बी से सी में कन्वर्ट हो रहा है तो फिर एक और एंथैल्पी चेंज आएगा और फिर वो सी जो है वो डी में कन्वर्ट हो रहा है तो उससे हमारे पास एक और एंथैल्पी चेंज आएगा डेट इज डेल्टा एच थ्री. सो जब हम हेसेस लॉ के अकॉर्डिंग इन तीनों एंथैल्पीज को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो डेल्टा एच साइक्लिक है वो 0 आना चाहिए. So that concept gives us a separate statement for Hess's law, that is sum of enthalpy change of individual reactions in a cyclic process is equal to 0. So Hess's law is an application of law of conservation of energy कि energy जो है वो cyclic process में उसका जो वो ना तो क्रिएट हो रही है ना डिस्ट्रॉय हो रही है जबकि कांस्टेंट रहेगी, उसमें जो चेंज है वो नहीं आएगा. So it means that if one goes from A to D directly and comes back to A through B, C, then delta H would be 0. Let's see an example, the formation of sodium bicarbonate. The formation of sodium bicarbonate may be studied as a single process. हम उसको एक single process के अंदर भी स्टडी कर सकते हैं या फिर हम उसको दो स्टेप्स के जरिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पहले फॉर्म करेंगे और उसको फिर सोडियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट करेंगे. सो लेट्स सी कि वहां पे एंथैल्पी चेंज क्या आते हैं. So let's see the reaction first in a single step. Single step process is two molecules of sodium hydroxide reacted with carbon dioxide to form sodium carbonate plus water. And enthalpy change is minus 89.08 kilojoule per mole. और अगर यही रिएक्शन टू स्टेप में प्रोसीड होगा तो किस तरह से होगा. लेट्स सी. Sodium hydroxide reacted with carbon dioxide to form sodium hydrogen carbonate and enthalpy change is minus 48.06 kilojoule per mole. Now sodium hydrogen carbonate will react with another molecule of sodium hydroxide to form sodium carbonate plus water. और इस स्टेप में जो एंथैल्पी चेंज है that is minus 41 kilojoule per mole. So in accordance to the Hess's law, delta H equals to delta H1 plus delta H2. Putting the values in equation we got delta H single step reaction में जो enthalpy change था that was minus 89.08 kilojoule per mole, जबकि delta H1 we had minus 48.06 and delta H2 was minus 41.02. So जब इन दोनों को हमने ऐड किया we got minus 89.08 which is equal to the single step process enthalpy change. This is how heat of reactions are added algebraically, thus proves Hess's law. So the question arises why we need Hess's law, and the answer lies in the following facts. There are so many compounds for which delta H cannot be measured directly by calorimeter. बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं, ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके लिए हम डेल्टा एच को डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते. सो उसके लिए हमें हेसेस लॉ की हेल्प लेनी पड़ती है. नेक्स्ट, सम कंपाउंड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड डायरेक्टली लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड. कार्बन टेट्राक्लोराइड की फॉर्मेशन और डिकम्पोजिशन इज अ चेन रिएक्शन. सो उसको भी हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते. हम हर स्टेप की इंडिविजुअल एंथैल्पीज को कैलकुलेट करते हैं और फिर उन सबको एडअप करके टोटल एंथैल्पी कैलकुलेट कर लेते हैं. Next is boron oxide and aluminum oxide provide problems in measuring enthalpies of formation as protective layers of oxides cover the surface of unreacted element. जितने भी oxides हैं
उनकी एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन मेजर करना भी प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि जितना भी अनरिएक्टेड एलिमेंट होता है उस पर ऑक्साइड्स जो है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं, तो वो अनरिएक्टेड एलिमेंट जो है वो कन्वर्ट नहीं होता प्रॉपर प्रोडक्ट में, तो उसके भी हम जो एंथैल्पीज हैं वो सेपरेट मेजर कर रहे होते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट Hess's law. Here are some practice MCQs. Hess's law is analogous to law of heat summation, law of increasing entropy, law of heat exchange, or law of thermodynamics. And the correct option is law of heat summation. Another question is, according to Hess's law, the enthalpy change for a reaction is depends on path, is equals to the sum of delta E and delta H, independent of the path, or none of these. And the correct answer is independent of the path. So this was all about Hess's law. I hope you people have understood the lecture very well, and thank you so much.